welcome everyone. Welcome back to the channel. So let's start with today's analysis video for 30th of July 2023. So firstly, we're taking up the newspaper, the Hindu newspaper Sunday edition. And let's find out what are the important topics for today. So in the Sahara saga, small investors, they find a new hope. So as a case study, we can understand this. So Center's refund portal, it returns only rupees 10,000 each to the investors. So ये एक limitation है कि only rupees 10,000 तक ही maximum amount है जो refund किया जा रहा है by the government जिन लोगों ने अपना पैसा invest किया था in the Sahara Fund. So irrespective of the amount जो भी इन्होंने मतलब investors का जितना भी amount हो maximum limit rupees 10,000 ही refund किया जा रहा है. And almost 15.28 lakh ऐसे investors है जिन्होंने register किया है for the refund. So soon after, new ministry to look after the cooperative sector that was formed in 2021, the corridors of its old offices at the Krishna Bhavan, Delhi Central Secretariat, they were filled with thousands of letters and postcards. So many of them handwritten, they had been stuffed in the gunny bags, all they had the same request of refund from the Sahara Group, which is a business conglomerate. It was like mired in the financial embezzlement. So this is the keyword, financial embezzlement. And currently, the matter, it is still under investigation by multiple agencies. Jisme Enforcement Directorate is one of them. So since 2008, the investigation is going on. We are in 2023. Abhi tak it has not been completed. And the group, it has raised rupees 80,000 crores from around, we can say, approximately 3 crore small time investors across 26 states. So 80,000 crore rupees उठाया गया था small investors. टोटल हम बोल सकते हैं अराउंड 3 करोड़ ऐसे स्मॉल इन्वेस्टर्स थे. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट इज रिफंडिंग ओनली द मैक्सिमम अमाउंट इज रुपीज 10,000 टू ईच इन्वेस्टर. सो यहाँ हम स्मॉल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं. तो स्मॉल इन्वेस्टर, यू कैन इमेजिन कि लोग कैसे एक एक पैसा इकट्ठा करते हैं, सेव करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं विद सम पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस ऑफ मेकिंग सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन फ्यूचर. बट यू कैन सी कि कैसा उनका पैसा मिसयूज किया जाता है. एंड अगेन जब रिफंड की बात आती है तो इट इज ओनली 10,000 तक उनको वापस रिफंड किया जाएगा, चाहे उन्होंने लैक्स ऑफ रुपीज भी इन्वेस्ट किए हो. So Union government, it has set up the central registrar of the cooperative societies portal. And this is for this refund exercise. Idea is to return at least rupees 10,000 to everyone from rupees 5,000 crore of corpus जो बनाया गया है. There are around 3 crore investors जिन्होंने पैसा लगाया. And the rest the amount जो है, ministry, it will approach the Supreme Court again for the rest of the amount. And the common service centers in villages, rural areas, they have been asked to help the rural investors who do not have access to computers and scanners. तो यहाँ पे जो common service centers है villages, rural areas में, वो help कर सकते हैं small investors को in terms of explaining them कि कैसे आप अपना पैसा वापस, like at least 10,000 तो उनको वापस मिले. So this is the entire thing about it. Center suspends IIPS director for hiring irregularity. So Center, it has suspended the director of the International Institute for the Population Sciences over alleged irregularity in the recruitment. So this basically it falls under the Ministry of Health, Family Welfare, and it conducts important studies like the National Family Health Survey, assessment of the National Rural Health Mission, Global Adult Tobacco Survey. So ये सब इस इंस्टीट्यूट के द्वारा किए जाते हैं. बट अगेन यहाँ पे वी आर सीइंग कि रिक्रूटमेंट में ही फ्रॉड किया जा रहा है, वहां पे इरेगुलरिटीज रजिस्टर की गई है. So Prime Minister Modi is fulfilling
APJ Abdul Kalam suggestions for India's development. So, Prime Minister has achieved the visions outlined by Kalam in his book India 2020, A Vision for the New Millennium, and is taking the country in the path of development. So, Kalam's vision was realizing the country's skill and potential. तो ये एक एरिया होगा स्किल डेवलपमेंट. दूसरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेवलपमेंट पे फोकस करना है. Thirdly, balanced growth between rural and urban areas. अब ये तीन मेजर हेड्स हो गए. अब आपको इससे नीचे पता होना चाहिए कि क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं. जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें, लाइक वी हैव कौशल विकास योजना जो स्किल डेवलपमेंट में स्किल ट्रेनिंग्स पे फोकस करता है. उसके अलावा टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेवलपमेंट. आज के टाइम में सबसे ज्यादा हम टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, ओपन एआई की हम बात करें, जनरेटिव एआई की हम बात करते हैं, तो दैट इज देयर. एंड उसके अलावा डिजिटली जो थिंग्स हो रहे हैं, वी आर लाइक बेसिकली ई गवर्नेंस की हम बात करते हैं, तो दैट इज अनदर थिंग. देन बैलेंस्ड ग्रोथ बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज. तो इस टर्म में बेसिकली कैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. इवन द नॉन फार्म सेक्टर्स जो है उनका भी यू कैन सी की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन फॉर द लाइवलीहुड्स फॉर द रूरल एरियाज. एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक हो गया. एमएसएमईज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रूरल डेवलपमेंट में. एंड अर्बन एरियाज के लिए लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटीज की अगर हम बात करें तो आईटी कंपनीज, एमएनसी, हाउ दे आर ड्राइविंग द ग्रोथ. स्मार्ट सिटीज की हम बात करते हैं, so that is there. So along with Japan and India, China can also join the debt relief efforts for Sri Lanka. So China की वजह से ही we are seeing कि जो China की debt diplomacy है उसके कारण ही वो एक one of the major reasons है for the current economic situation of Sri Lanka. And जब हम relief measures की बात करते हैं तो उसमें it is possible कि China can also join. So, as a large creditor to the Sri Lanka, China is welcome to join the effort stirred by Japan, India, and France to help the island nation cope with the debt distress. So, this is one of the efforts, one of the ways how India is aiding and helping Sri Lanka to come out of the crisis. एंड इसके अलावा बाकी जो फाइनेंशियल एड हमने दिया है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की आप बात कर सकते हो. हमने क्या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए हैं इन श्रीलंका, सो दैट कैन बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो ये थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल, मोर रेलेवेंट, मोर रीसेंट. सो इस तरीके से क्वेश्चंस आर आस्क्ड. एंड apart from this, like IMF से जो aid मिलता है, that is there. World Bank to speed up the relief measures for the countries facing debt vulnerabilities. So globally अगर हम debt management की बात करें तो that is a global problem, not just श्रीलंका के लिए या पाकिस्तान के लिए, but globally it has become a concern. तो जो न्यू डेफिनेशन है फॉरेस्ट की, इट मेक्स लार्ज ट्रैक्ट्स वल्नरेबल. सो क्रिटिकल एनालिसिस की अगर हम बात करें, सो इट इज टॉकिंग अबाउट दैट. बट ये हम टॉपिक पहले कंप्लीटली अच्छे से इन डिटेल क्रिटिकली एनालाइज कर चुके हैं. क्या रिसेंट चेंजेस किए गए इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड अमेंडमेंट्स जो किए गए, जो डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट है बेसिकली कहीं ना कहीं डाइल्यूट की जा रही हैं चीजें. सो उसकी वजह से जो प्रोटेक्शन है दैट वुड कम अंडर थ्रेट. हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, सो दैट्स देयर. So India की tiger population increases and Madhya Pradesh it has most big cats. So highest number of population of tiger India में हमें मिलती है मध्य प्रदेश में. And tiger census किया जाता है. So tiger numbers have increased in states like Uttarakhand, Maharashtra,
एंड जो लोकलाइज्ड डिक्लाइंस है वेस्टर्न घाट्स में डिक्लाइन देखी गई है. डिस्पुटिंग ट्रेंड्स इन मिजोरम, नागालैंड, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़ एंड अरुणाचल प्रदेश. सो इन स्टेट से भी वी आर नॉट गेटिंग गुड results. So tiger population increases. Analysis by the Wildlife Institute of India puts the average number of tigers in India at 3682. And this is the trend कि कैसे tiger population increase हुई है. And you can see it, understand कि gradually increase हुई है every single year from 2006. Now I can say every single year मतलब tiger census जो है हर 4 साल में एक बार किया जाता है. तो मतलब in every census we have recorded an increase in the population of tigers in India. So scientist toughest experience की अगर हम बात करें, experiment, toughest experiment, not experience. So sourcing the quality products from the government e-marketplace. So इसकी अगर हम बात करें e-NAM, that is मतलब obviously for farmers, एक वो एक different dimension हो गया कि farmers के लिए how helpful e-marketplace is. So while the Science and Technology Ministry has announced its intent to galvanize the research in India through the NRF, इसके बारे में हम separately बात कर चुके हैं. Scientists they say कि mandatory procurement via the government e-marketplace, it's a major stumbling block impeding the sourcing of equipment and the materials necessary for research. मतलब ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि जो भी आपको प्रोक्योरमेंट करनी है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से ही करनी पड़ेगी. सो इसकी वजह से थोड़ा सा वी कैन से कि यहाँ पे चैलेंजेस आ सकते हैं. एंड e-NAM एक डिफरेंटली मतलब दैट इज फॉर फार्मर्स वेलफेयर एंड टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. तो दोनों इलेक्ट्रॉनिक है बट पर्पस थोड़ा सा डिस्टिंक्टिव है. सो बंगाल की अगर हम बात करें, वेस्ट बंगाल में विलेजेस एंड श्रिम्प फार्मिंग. सो ये एक इमर्जिंग एरिया है इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड. सो पीपल बेसिकली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, सो दे आर ऑल्सो साइमल्टेनियसली focusing upon shrimp farms. So it thrives on the mangrove litter. So unlike most of the bhairis, which is shallow fish ponds, जिनको bhairis बोलते हैं West Bengal में, they are spread over the Meenakha block in West Bengal's North 24 Pargana district. 2 hectares pond है Pintudas in the Chaital village is dotted with trees. So rows of trees, they form clusters at various places in the pond and they occupy the raised earthen embankments, which become slippery after every spell of rain. So properly case study है. And you can go through it. And as an example, आप answers में भी इसको लिख सकते हो. So mangrove trees with their elaborate roots, they hold the soil and abate the storm surges in the region dotted with the shallow fish ponds. So एक मतलब natural barrier की तरह भी mangroves बहुत important role play करते हैं. So name of this initiative is SAM, it stands for Sustainable Aquaculture in Mangrove Ecosystems. So it was started in 2020 and it is funded by Government of Germany and the Global Nature Fund. So this is an initiative of integrating the shrimp cultivation with the mangrove plantation. So that's the whole idea. So Bangladesh की अगर हम बात करें तो Bangladesh police clash with the protesters blockading the capital. 90 activists they have been injured. So Sina government has been accused of human rights abuses, corruption and authoritarianism. So इसकी वजह से we are seeing people are protesting on the streets. So being India's neighbor थोड़ा important हो जाता है हमारे लिए पता करना या you know to be aware about what is the actual domestic situation in a country. Science page पे plastic pollution widespread in the water bodies across the world. So this is a situation हमें सोचना चाहिए कि what are the possible solutions. प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में बहुत बात करते हैं
माइक्रोप्लास्टिक्स एक इम्पोर्टेंट एरिया है, बट वी नीड टू फोकस अपॉन सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं. So threat of dengue fevers escalates globally. So this is becoming a global health issue. So recent surge in the dengue cases globally, including in new regions, it has been alarming and poses significant global health challenges. So WHO forecast the possibility of record level cases expect करते हैं this year because of global warming. It is favoring this disease transmitting mosquitoes. So global warming की वजह से and even अगर हम बात करें specifically India की context में, we are seeing right now at this particular point of time, different states में we are seeing floods. So even because of that also we are seeing कि dengue cases are increasing. So Israel की अगर हम बात करें and the crisis situation there in Israel, so यहाँ हम बात करें judicial reforms के बारे में. So what are the implications of the Knesset's vote to curtail the Supreme Court's oversight power? And basically judicial reforms थोड़ा सा dilution की तरफ ही indicate कर रहे, तो इसी वजह से we are seeing massive protest in a developed country like Israel. So one part of the reforms is जो Supreme Court की oversight powers हैं उसको curtail करना. Then how does it strengthen government's hand over the courts, and why have there been widespread protests? So this vote, it abolishes the reasonable doctrine, which is which the top court it has often used to assess government decisions. तो अगर ये चीज implement हो जाती है तो again जो judiciary की power है dilute हो जाएगी, and again जो effective assessment of the government decisions है वो it might not be possible because government के पास ज़्यादा power हो जाएगी. So what was this bill which was passed in their parliament जिसको हम Knesset बोलते हैं? So Knesset legislation abolishes the reasonable doctrine which the top court it is often employed to assess key government decisions and ministerial appointments also. So reasonableness is a legal standard which is used in several countries like Australia, Canada and UK by the top courts to assess government's decisions. So reasonableness एक ऐसा लीगल स्टैंडर्ड है कि रीजनेबलनेस चेक की जाती है इन दीज कंट्रीज. जो भी गवर्नमेंट के डिसीजंस रहते हैं कितने रीजनेबल हैं वो डिसीजंस. सो इजराइल में व्हिच डज नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, courts they cannot measure government's decisions constitutionally, but the reasonability doctrine that has worked as a critical judicial check on the executive decisions. So वहां पे इसकी यूटिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है बिकॉज इजराइल के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. सो कोर्ट इट कुड डिटरमाइन वेदर जो गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया है या कोई मिनिस्टीरियल अपॉइंटमेंट की है क्या वो सेंसिबल है, फेयर है, एंड अगर नहीं है तो इट कुड बी नलिफाइड. So अब एग्जाम्पल भी mentioned है. And so supporters of the government they say कि reasonability standard is abstract and it allows the judicial overreach. So hence they wanted to strike it down. So ये reason दिया गया है by the government supporters, और आप बोल सकते हो by the government कि they feel कि जो ये reasonability doctrine है, reasonableness जो check की जाती है by the court वो abstract है and इसकी वजह से judicial overreach होती है. So इसलिए उन्होंने इसको strike down किया है. सो और क्या बाकी प्रपोजल्स हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स के प्लान में? सो ओरिजिनल जो ओवरऑल प्लान था इट इज डिफरेंट पार्ट्स व्हिच टुगेदर इट वुड स्ट्रेंथन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द कोर्ट्स. सो वी कैन से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहीं ना कहीं हो जाएगा, एंड वन ऑफ देम वाज द एबॉलिशन ऑफ द रीजनेबिलिटी डॉक्ट्रिन. हम अच्छे से समझ चुके हैं. The government it also proposed to curtail judicial review over the legislations and then empower the parliament to override the court decisions with an absolute majority of 61 votes. So you can see completely it's an indication towards centralization of power की judicial review की power भी court से ले ली जाएगी and parliament के पास overriding powers आ जाएंगी. So जो भी court के decision रहेंगे अब पार्लियामेंट उनको रिव्यू करेगा इंस्टेड ऑफ कोर्ट रिव्यूइंग जो भी लेजिस्लेशंस पास की जाती थी बाय द पार्लियामेंट. सो कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द एंटायर मशीनरी वी कैन से. So this is there.
एंड बस हमें ये पता होना चाहिए कि रीजन क्या है जो भी इसराइल में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। एक दो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। क्या जुडिशियल रिफॉर्म्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या रिफॉर्म्स है, व्हाई पीपल आर प्रोटेस्टिंग। So I feel this is more than enough, and if you want to go through this entire article, you can go through it. So ह्यूमन चैलेंज स्टडीज के बारे में अगर हम बात करें, क्या ये इफेक्टिव होती है नहीं होती है। सो व्हाट इज द ICMR बायोएथिक्स यूनिट प्रपोजिंग, प्रपोजल क्या है, एंड why are these trials, why are they challenging than the clinical trials, what will be the benefits क्या हो सकते हैं, एंड स्पेसिफिकली ऐसे एरियाज में जहाँ पे बर्डन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस बहुत हाई है। So let's understand this. So we see why is India venturing into undertaking human challenge studies. So human challenge studies जहाँ पे human beings they are exposed to diseases to learn more about it have been carried out for hundreds of years. मतलब ये पहले भी की गई हैं। एंड चाहे आप बात करें येलो फीवर स्टडी इन द अर्ली 1900s and established कि mosquitoes they transmitted the yellow fever virus. However, India it is not undertaken ऐसे trials, हमने पहले इंडिया में नहीं किए। तो ह्यूमन ट्रायल्स, ह्यूमन चैलेंज स्टडीज बेसिकली जो डिजीज है ह्यूमंस को उसको एक्सपोज करना एंड फिर सिम्टम्स या रिजल्ट्स देखना, उनको एनालाइज एंड स्टडी करना इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो इंडिया में पहले ऐसे नहीं किया गया है कभी भी। सो ह्यूमन चैलेंज स्टडीज जो है देर ऑलमोस्ट ऑलवेज कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड वेरियस फेसेट्स ऑफ इन्फेक्शियस माइक्रोब्स एंड डिजीजेस, एंड अगेन क्या रिजल्ट्स हैं, एंड देन ऑब्वियसली you need to think about and work upon the solutions as well. So what is the fundamental difference? So fundamental difference between the two scientific methods is the nature of exposure to pathogens by the participants. So participants in the traditional clinical trials की अगर हम बात करें, they are strongly advised to adopt and adhere to the safety measures to avoid getting infected, and infection is left to chance. ऑपोजिट इज द केस जब हम ह्यूमन चैलेंज स्टडीज की बात करें, क्योंकि वहां पे जो वॉलंटियर्स हैं ह्यूमन बींग्स जो हैं दे आर बेसिकली डेलिबरेटली उनको एक्सपोज किया जाता है ऐसे इन्फेक्शियस डिजीजेस से, पैथोजन से जो डिजीज कॉज करते हैं, फिर उनको स्टडी किया जाता है। तो ये ऑब्वियसली फंडामेंटल डिफरेंस है। सेकेंड मेजर डिफरेंस की बात करें कि जो ट्रेडिशनल क्लिनिकल ट्रायल्स एंड दे आर अंडरटेकन टू स्टडी द सेफ्टी क्या है एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन जो भी हैं उसको स्टडी करने के लिए किए जाते हैं। बट ह्यूमन चैलेंज स्टडीज में दे आर कैरिड आउट टू अंडरस्टैंड और बाकी फेसेस ऑफ इन्फेक्शन या डिजीज पैथोजेनेसिस बिसाइड्स सिलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट ड्रग्स और वैक्सीन के लिए किए जाते हैं। ऑब्वियसली स्पेसिफिक एंड स्पेशल गाइडलाइंस एंड सेफगार्ड्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड एक्सेप्ट इन वेरी रेयर केसेस लाइक अगर हम कोविड-19 इन्फेक्शन की बात करें तो infectious agents that are tested in the human challenge studies, they are well known and they are well studied. So to reduce the harm to the participants, a weaker or less virulent form of pathogen was used. So यहाँ पे भी human challenge studies की अगर हम बात करें तो थोड़ा less severe form of pathogen use किया गया था। So हमारे पास एक रेस्क्यू रेमेडी जरूर होनी चाहिए टू प्रिवेंट द डिजीज फ्रॉम प्रोग्रेसिंग टू इट्स सिवियर फॉर्म। सो ये कुछ सेफगार्ड्स मेंटेन करना, फॉलो करना एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे एक एथिकल एंगल भी आ जाता है। तो एथिकली दीज स्टडीज, दीज टाइप्स ऑफ ह्यूमन चैलेंज स्टडीज एथिकली बहुत चैलेंजिंग हो जाती हैं। सो पार्टिसिपेंट्स जो भी होते हैं इसमें, वॉलंटियर्स जो ऑब्वियसली उनका वॉलंटियर डिसीजन होता है, दे आर डेलिबरेटली एक्सपोज किया जाता है उनको डिजीज कॉजिंग पैथोजन से। सो दैट्स व्हाई इट इज एथिकली मोर चैलेंजिंग। And ICMR consensus statement, it is clearly mentioned कि only healthy individuals जो हैं between the age of 18 to 45 years of age bracket, only they can enroll. So children and women जो pregnant हैं, lactating mothers हैं, planning to conceive within study period, they cannot enroll. Children, they will be included when they're deemed appropriate. And अभी के लिए children they cannot participate. And जो ऐसे participants हैं which are suffering from pre-existing medical conditions, again they are also excluded, and this makes it essential to carry out the detailed medical examinations, proper thorough medical examinations करना important हो जाता है।
On the business page, we see that Finance Minister urges the Japanese investors to expedite the investment, back artificial intelligence and the renewable energy. So इन तीन areas में जापान की जो investments रहती हैं इंडिया में उनका important role है. They enjoy importance. So Sitharaman acknowledges that Japanese, they have been prudent investors, but notes that a lot of time is consumed in taking a decision. So जो decision taking time होता है, that is huge या बहुत ज्यादा होता है. And she also cites कि signature जो projects हैं Japan is involved in such as metro across cities. So this is where Japan की जो investment है वो involved है. Bullet train project is in collaboration with Japan, reminds them of their past outlays that have yielded good outcomes. मतलब अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको good yield या good outcome, good profits भी मिले हैं. So a slightly more speedier अगर थोड़ा decision making process में और improvement हो जाएगी, and you're treating India as a development partner, it would serve the cause. So India Japan relationship अपने आप में पूरा एक important topic हो जाता है. यहाँ पे हम in terms of economic relationship ज्यादा बात कर रहे हैं India Japan के बीच में. Coming to Financial Express newspaper, so let's see some important topics from economy. So brands, they turn to experimental retail with artificial intelligence tools. So experimental retail क्या idea है इसके पीछे? So from search to virtual try-ons, artificial intelligence, it is changing shopping. मतलब अगर आपने suppose लेंस कार्ड से कभी specs order किए हैं तो there you can basically try these virtual try-ons. So यहाँ पे artificial intelligence की application आ जाती है. So that's how basically that's how technology या artificial intelligence is changing your shopping experiences. So herein यहाँ पे थोड़ा businesses and brands, they are trying to use the experimental retail thing and to better understand the demands and to expand their sales and profits. So chip design, semiconductor chip design industry पूरा मतलब एक बहुत important topic है आज के time में for India. So opening the field for Make in India scheme likely to support the larger companies as well. So this is the DLI scheme. It is part of the government's rupees 76,000 crore semiconductor incentive scheme. Government has kept aside rupees 1,000 crore for the DLI scheme. DLI is design linked incentive scheme to bigger companies. And like we have PLI, so likewise on similar lines, we'll be going ahead with the DLI for the semiconductor and the chip design thing. So four-pronged strategy to make India developed. So let's see. So it is talking about 4 I's: infrastructure, investment, innovation, and inclusiveness. So ये 4 areas हैं which needs to be focused upon according to a Union Finance Minister for India to become a developed country. So India in the top emerging markets. And why are we saying this? Because जो FIIs हैं and जितना पैसा वो इंडिया में लगा रहे हैं, invest कर रहे हैं, on that basis we are saying that India is among the top emerging markets globally. क्योंकि इंडिया की अगर आप economic resilience की बात करो, economic performance, economic competitiveness, तो आज के time में we are one of the most strongest economic countries. And definitely globally जो challenges हैं ऐसी situation में that becomes much, we can say much more important and significant for India. So that's why we are attracting more investments. चाहे आप FIIs की बात करो या even in semiconductor industries, we are seeing India-Japan cooperation की हमने बात करी. So these are some of the areas. So अगर हम inflows की बात करें तो you can see financials में, industrials, consumer discretionary में how much money is coming in.
So India's G20 Sherpa Amitabh Kansa says कि $5 trillion annual funding required है, needed है. Firstly, to meet the global SDGs, and secondly, for green energy transition. So if emerging markets have to provide most of the growth, global financial architecture, and the flow of resources, they have to be altered to suit this to provide greater impetus to the group, basically talking about G20. So technology की बात करें, can see reality of virtual metaverse. So almost 2 years after the Meta's historic rebranding and beyond the forecast, is metaverse more hype than hope? So you can just, go through this article, थोड़ा सा lighter topic है. एंड एक और थोड़ा सा मतलब रियलिस्टिक सा टॉपिक जो आज के टाइम में वी आर सीइंग कंटेंट क्रिएशन, एक इंडस्ट्री पूरी इवॉल्व हो रही है, इट इज ग्रोइंग. सो रिड्यूसिंग किड्स टू कंटेंट, मतलब किड्स बेस्ड कंटेंट आप वीडियोस में अपने बच्चों को ले रहे हो और जो भी इन्फेंस है. सो दैट इज यहाँ पे थोड़ा GS4 एथिक्स से आप रिलेट कर सकते हो. सो sharenting, which is oversharing one's kids lives online, it can cause much trouble. So it is not uncommon aaj ke time mein to stumble upon pictures or vlogs of children on social media generally, which is shared by their parents. However, there is sharing and then there is oversharing, which leads to what is called sharenting. So this is an act wherein parents they overshare the aspects. At times they initiate, at times they imitate of their children's lives online also. And as per 2018 report, from the Office of Children's Commissioner of England, by the time children they'll turn 13, their parents they have had posted around 1,300 pictures and videos of them online. This is as per a study data ki baat kare. So the act it has only grown since then, and we're seeing raw content creation just for the your vested interest, yeah, for material gains. You're doing this. So although parents they might think it is harmless act, the reality is far from truth. So not only does this invite unwanted gaze, because obviously it impacts the eyes of the infants, screen time की वजह से, and often scrutiny also. So the pictures, videos, they can be misused digitally. That is another threat. Even make their way into the hands of digital pedophile. So it is not only pictures or videos तक की बात नहीं. It is not just limited to that, but crucial data, उनका नाम, residence, age, that can also fall into the hands of fraudsters. So cybercrime can be another ill repercussion of this act. So identity theft is another issue. And then there's a question of consent also. So as children, they are in no position to give the consent to be shared online. It is up to the parents to be mindful of the digital footprint involving their children. So they are in no position to give their consent for their lives to be shared online. Hence, it is for the parents to realize the long-term like repercussions or representations that they're sharing वो क्या हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो they are infants, but once they grow, उनकी consent के बिना if you're doing it, even if you're parents, so obviously आपको थोड़ा long-term perspective से सोचना important है rather than earning short-term gains.
Coming to Indian Express newspaper. So let's see the important things over here. The education in mother tongue is key step towards social justice, says the Prime Minister. So mother tongue, very important education. अगर आप prefer in mother tongue, so obviously understanding of children improves. So pointing out that the biggest injustice to any student is to be judged on the basis of language rather than capability. So capability or judgment on the basis of merit is much more important rather than on the basis of language. So education in mother tongue is initiating a new form of justice for the students in India and is a significant step towards social justice. So you can see how the language the education आप कौन सी language में provide कर रहे हो उसको कैसे social justice से connect किया गया है. So that's how basically even the answers also आपको थोड़ा इतना broad सोचना है. You're able to connect different things and dimensions. So we have talked about the tiger census. Results क्या हैं? World page पे US announces military aid package for Taiwan amid tensions with China. So यहाँ पे थोड़ी tensions और ज़्यादा increase हो रही in the Taiwan Strait. And कल हमने बात करी थी कि how basically China and Russia, they've moved closer, specifically after the Ukraine war. And Japan or India, they are basically discussing कि अगर Taiwan Strait में in future अगर there's a war like situation या war start हो जाता है तो how Japan and India would be responding to it. So France president, he's in Sri Lanka, he calls for open and inclusive Indo-Pacific. So keywords पे आपको ध्यान रखना है हमेशा जो भी आप टॉपिक रीड कर रहे हो एनालाइज कर रहे हो. So keywords definitely Indo-Pacific. So hot topic. बांग्लादेश प्रोटेस्ट की हम बात कर चुके हैं. What are the reasons? We have seen that. So four eyes की हम बात कर चुके हैं. To make India a developed country, to build a globally competitive presence in semiconductor ecosystem over the next 10 years. So हमारा क्या विजन है for the semiconductor industry, self reliance next 10 years में where do we see India in terms of semiconductor chips, and stating that India's future is bright in the semiconductor ecosystem. The Minister for State for Electronics and IT said that ministry will build a robust and competitive presence in the global semiconductor ecosystem in the next 10 years. So MOU was also signed between the Center for Nanoscience and Engineering at the Indian Institute of Science, Bengaluru, and the Lam Research India. So they aim to develop a specialized course for Indian universities teaching semiconductor fabrication technology. So, not just in terms of manufacturing and designing, but even in terms of education or kya interventions required. Hai. So this is an indication towards that. So let's take up Sunday Times also. So let's see अगर कुछ हमने miss कर दिया है in the discussion so far.
सो मिशन मिलेट्स की अगर हम बात करें, माइटी मिलेट्स नेचर्स गिफ्ट. So millet diet, it is good for health. It is good to fight obesity and the preventive power. So ये from the perspective of health हो गया. But even for farmers also, when we talk about doubling the farmers' income, although we have missed the target here, but वहाँ पे भी it can immensely help. वहाँ पे हम काफी progress देख सकते हैं. And third dimension हो जाएगा कि they are climate resilient crops. So ये तीन important dimensions है जब हम millets की बात करते हैं. तो उसकी न्यूट्रिशियस कैपेसिटी जो है, मतलब इट कैन आल्सो हेल्प अस इन फाइटिंग द न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी, जो मेजर प्रॉब्लम है आज के टाइम में. फूड इनसिक्योरिटी या फूड सिक्योरिटी वो हम ओवरकम कर चुके हैं, बट अगेन न्यूट्रिशन वाली जो प्रॉब्लम है वो हम मिलेट्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं. सो पहले के टाइम में वी यूज टू कॉल मिलेट्स एज द पुअर मैन्स फूड, मतलब गरीब लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज जो भी बोलो उनके प्राइस की वजह से. बट आज के टाइम में यू कैन सी हाउ थिंग्स हैव चेंज, सो उसकी वजह से मिलेट्स यू कांट इग्नोर देम. तो इंडियन नॉलेज सिस्टम की हम बात करें, एंड वी सी के 106 MOUs on education innovation have been inked so far, and 6 agreements are going to promote Indian knowledge system. So Akhil Bharatiya Shiksha Sangamam, it witnessed signing of 106 MOUs between center and various organizations to forge partnerships and foster innovation and research in multiple domains. So under school education and literacy, 20 MOUs they were signed, and that was under the aegis of E-Vidya initiative. Then CBSE के under there were 19 MOUs जो sign किए गए in association with Atal Innovation Mission. Then we have different organizations, MNCs, IBM है, Intel है, Microsoft. They have also come into the picture. Higher education, maybe we have signed MOUs to promote Indian knowledge system. 14 MOUs that are under the National Education Technology Forum. Then in a bid to bolster the international collaborations also, भी अगर हम बात करें higher education के context में भी we are working there also. So all this is basically in the context of NEP 2020. And कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटी है, दे आर प्लानिंग टू सेट अप देयर फर्स्ट फॉरेन कैंपस. बेसिकली इंडिया में अभी तक वी आर नॉट सीइंग एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, सो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन. सो एक्स आर्मी चीफ का कहना ये है कि अगर हम मणिपुर सिचुएशन की बात करें तो वी कांट रूल आउट द फॉरेन एजेंसीज रोल देयर, तो वी कांट बेसिकली इग्नोर दैट. सो flags China's aid to the insurgent groups in northeast over the decades. So ये एक important dimension है, obviously this cannot be ignored or overlooked. And बाकी जो situation है वो हम already we are aware of that. एंड कल हमने डिटेल डिस्कस किया था इंडिया और म्यांमार बॉर्डर के कॉन्टेक्स्ट में, स्पेसिफिकली मतलब मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्कस दिस. जो पोरस बॉर्डर है वो कैसे चैलेंज एक्ट करता है, एंड जो फ्री सेफ्टी रिजीम है अक्रॉस द बॉर्डर, आप मूव कर सकते हो अप टू अ सर्टेन लिमिट, सर्टेन किलोमीटर, 16 किलोमीटर्स एज पर एज आई कैन रिकॉल. तो वो सब हमने इन डिटेल डिस्कस किया था.
So you can see through this map कि number of tigers in India कौन से state में कितने, maximum is in मध्य प्रदेश. कौन से ऐसे states है जहाँ पे tigers बिल्कुल भी नहीं है, तो वो भी पता होना important है. So rebuilding India's statistical system, an important topic. So Indian national statistical systems, they are in crisis. So either data needed for the policy making या तो वो available नहीं है या वो reliable नहीं है. So quality of data के ऊपर भी questions raise किए जा रहे हैं. So that is a important thing that needs reforms. And Indian statistical infrastructure, it has not kept pace with the global advances. So that's why अब ऐसे हम critical juncture पे आ गए कि we need reforms in India's statistical system. So past decades, they have seen tremendous advances in the methods of data collection की बात करें, collation की बात करें, computerized surveys का जो numbers है, that is increasing, and in-person या telephone, web and text-based surveys, interviews, that is also increasing. So they also allow better quality monitoring using the audio recording as well. And advances in sampling methods is also required. That includes responsive survey design, where the interviewers, they're asked to make a greater effort in interviewing the individuals with rare characteristics. So training of such people, that is another thing that needs to be focused upon. And that's there. So that's all for today. Thank you for joining us in today's analysis session. And I hope the topics that we took up are clear. And do subscribe to the channel and also hit the like button for the video. Thank you so much.